Good morning, students. Today we are going to do this workbook. Take out your workbooks, everyone. Take out your workbooks. We are going to do workbook today. I mentioned on the board as well. I'm writing down the page number. Page number is 23. पेज नंबर 23 ये हमने पहले कर लिया था previously each से पहले. Now we are going to do this and the next pages. First of all, take out this page number 23. ठीक है? Page number 23 of workbook. What we have to do is we have to do question number 4. We have to do question number 4. The prefixes I, L and IR mean not. Tick the correct definitions of the underlined word. इसका मतलब है कि जो आई एल और आई आर प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है नो. अगर ये किसी भी वर्ड से लग जाता है पहले तो वो उसका मतलब होता है नॉट. जैसे इरेगुलर कि वो रेगुलर नहीं होता, ही इज नॉट रेगुलर. सो लाइकवाइज यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हुई है. वी हैव टू टिक द करेक्ट वन. ओके, आई एम रीडिंग द नंबर 1. पीपल्स आंसर वाज इररेलेवेंट. अब यहाँ पे इररेलेवेंट है. यहाँ के दो ऑप्शंस है. नॉट अबाउट द क्वेश्चन, नॉट इम्पोर्टेंट. टीचर irrelevant means it is not about the question. ये क्वेश्चन के बारे में है ही, वो रेलिवेंट है ही नहीं उस चीज से. तो the first one is done for you. A irrelevant. Option A किया हुआ C. This is the tick mark. Now number 2. People who drop litter are irresponsible. People who drop litter are irresponsible. Do not think about the result or unhelpful. तो इसका आंसर है A. A के ऊपर टिक करें. Here tick the A option. Number 3. In many countries, dropping litter is illegal. Not a problem, against the law. So number B पे टिक करें. Against the law. Illegal means कि जो आप law के according नहीं होता, law के against होता है. Tick B. Against the law. Number 4 is my sister's handwriting is illegible. Not very big, impossible to read. Tick option B. Number 4 पे tick option B. Number 5. The dog's breathing was irregular. इसका है option B. Sometimes fast and sometimes slow. Option B पे tick करें. Sometimes fast, sometimes slow. Number 6. Grandmother's vase was irreplaceable. Irreplaceable means which is not possible to find one like it. A पे टिक करें. In the past, many people were illiterate because they did not go to school. Option A पे टिक करें. Not able to read or write. Okay, I'm telling you again. नंबर 1 का है ऑप्शन ए. नंबर 2 का है ऑप्शन ए. नंबर 3 का है ऑप्शन बी. नंबर 4 का है ऑप्शन बी. नंबर 5 का है ऑप्शन बी. नंबर 6 का है ऑप्शन ए. नंबर 7 का भी है ऑप्शन ए. वी आर डूइंग पेज नंबर 23 ऑफ वर्कबुक. पेज नंबर 23 ऑफ वर्कबुक जो हमने ये कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 1 का है ऑप्शन ए विच इज डन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए. आफ्टर दैट टीचर you have to take this page. Previous page सारे छोड़ दे. Leave previous pages. Take page number 27.
Take out page number 27, everyone. Take out page number 27. Take out page number 27. This is also about tick two correct meanings for each word. टू मीनिंग्स दिए हुए हैं, हमने हर वर्ड के टू करेक्ट मीनिंग्स के ऊपर टिक करना है। 3 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 2। Tick 2 correct meanings for each word. Number 1 is bat, flying animal, something sails on the sea, wooden club. Bat doesn't sails on the sea, समंदर पे नहीं होते, so option A और option C is the correct answer है, and which is done for you on page number 27. Now look at this question number 2. Match, a team game. Look good together, part of boat. Match part of boat नहीं होता, so option A and option B. Tick option A and option B. Number 3 is drop. Let something fall, a kind of drink, small amount of liquid. So drop is not a drink. It is दो ऑप्शन होते हैं। ड्रॉप के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक something fall, जो हम कोई चीज गिर जाती है, I drop my pencil. Second, small liquid, small amount of liquid that we put drops in our eyes, in our ears. So वो drops होते हैं, small amount of liquid use. So teacher, option A or option C. Teacher. Click on option A and option C. Now number 4, fair, F-A-I-R, fair, magic person, light in color, treating all equally. So it has 2 meanings, same word with the 2 different meanings. Light in color, treating all equally, B and C. Tick option B and tick option C. Tick option B and tick option C. Number 5, lead, go first, lie down, type of metal. So lead's meaning is go first and type of metal. Tick A and C. Tick option A and option C. Minute, 60 seconds, very small, naughty. So minute means 60 seconds and very small. Tick option A and option B. Number 7, shoot, part of a young plant, fire a gun. Option A and option C. We are on page number 27 of workbook. Those who have joined late, page number 27 of workbook, question number 2 we are doing. ये मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको. Check your answers. Number 1 का है option A and C. Number 2 के हैं option A and B. Number 3 के हैं option A and C. Number 4 के option B and C. Number 5 का option A and C. Number 6 का option A and B. Number 7 का है option A and C. Now we are going to do question number 3. Choose one of the words, write a sentence for each meaning of the word. अब हमने एक word select करना है और उसके sentence बनाना है. So I'm writing on the board, note it down. We are going to choose word drop. Question number 3 we are doing. The word is drop. First sentence is, the player dropped the ball. Number 2 है, a drop of water fell on my book by
mistake. So I have made two sentences with two different meanings. Drop के two different meanings के साथ two sentence मैंने बनाए हैं. The first sentence is drop means गिरा देना. The player dropped the ball. कि player ने ball को गिरा दी, छोड़ दी, drop कर दी. The second meaning of drop, a drop of water fell on my book by mistake. Drop means एक कतरा जो पानी का होता है, that is that drop of water. तो एक पानी का कतरा मेरी बुक के ऊपर गलती से गिर गया. A drop of water fell on my book by mistake. Write these two sentences over here. यहाँ पे. You have to write these sentences over here. Okay. Write down these sentences so that we can move further. Have you done the player dropped the ball? A drop of water fell on my book. फर्स्ट वन हो गया, दूसरे वाला कर रही हूँ. Now we are going to do question number 4. Put the syllables in the right order to form words ending with NESS. We have two ये syllables दिए हुए हैं. These are the syllables. These are not in arranged manner. So हम इनको arrange करके एक word बनाएंगे which we will write here. So I am doing this on the board for you. I am rubbing this. I'm repeating once again. The player dropped the ball. Sentence number 1. A drop of water fell on my book by mistake. Sentence number 2. Now I'm raising it. By mistake. Mistake. Okay, we are going to do question number 4. I will just write the answers. Okay, the first label is, first one is done for you. It is politeness. What it is? Politeness. Politeness. And second is kindness. Third word is nervousness. Fourth word is thoughtfulness. Fifth word is helpfulness. Sixth word is tiredness. And the last word is selfishness. So these are the 7 words. Politeness, kindness, ये arranged order में नहीं है, so we have to arrange them and write it there. Politeness, kindness, nervousness, thoughtfulness, helpfulness, tiredness, and selfishness. These are the words. Write it down on your books.
Have you done? Politeness, kindness, nervousness, thoughtfulness, helpfulness, tiredness, and selfishness. After that, take out page number 28. Take out page number 28. We are going to do this page. Question number 5. Politeness, kindness, nervousness, thoughtfulness, helpfulness, tiredness, selfishness. These are the 7 words which were not arranged. So we have arranged them and write it down here. Now I'm going to rub it. I hope you have done your work. Now we have to take out page number 28. And question number is 5. तो मैं सिर्फ ये वर्ड्स लिखूंगी बोर्ड पे, ठीक है, और इनको मैचिंग कर दूंगी. बाकी हर वर्ड को आपने ऑब्वियसली इसके साथ मैच करना है. यहाँ पे वर्ड्स दिए होंगे, स्कोर शीट. यहाँ से वर्ड्स को देख के हमने यहाँ से मैच करके वर्ड्स बनाने हैं. So I will not make this batch here. मैं बोर्ड पे सिर्फ ये 2 वर्ड्स लिख के इनकी मैचिंग कर दूंगी. थर्ड पे आपने इसके साथ ही सबने मैच कर देना है, ठीक है. And the last word is SION. SION हर वर्ड को मिला के एंड पे वो वर्ड यहाँ पे इसके साथ ही आके ज्वाइन होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. एक्सर्शन यूं होगा, ठीक है. उसके बाद DE से कौन सा वर्ड यहाँ पे बन रहा है? लुक हियर. फाइंड DE से कौन सा वर्ड बन रहा है? सेकंड लास्ट, डिसीजन. सो व्हाट वी विल डू, DE को मैच कर देंगे CI के बाद. उसके बाद SION, डिसीजन. ये एक सेकंड वर्ड बन जाएगा. नेक्स्ट इज EX, एक्सप्लोजन. CEX से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है? ये वाला EX, PLO. EX को PLO के साथ मैच करके SION, एक्सप्लोजन. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टर दैट CO है, तो हमने देखना है O से कौन सा वर्ड यहाँ पे बन रहा है? ओकेजन. O से ओकेजन. सो OCCASION, occasion. And the next word is AD. So we will see कि AD से कौन सा word यहाँ पे बन रहा है? Admission. So we will use AD, MISSION, admission. Next word is RE. RE से कौन सा word बन रहा है? First word revision,
REVISION, revision. Third word is CON. CON से कौन सा word बन रहा है? Here, confusion. CONFUSION, confusion. So ये एक इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? I hope you are finding it easy to do your work. आज हम वर्कबुक का काम करेंगे. I will send you homework as well, and I will also send you question answers of chapter number 8. Previously जो हमने ईद से पहले chapter 8 की reading की थी and explanation and book work, उसके question answers रह गए थे. So I will send you those question answers as well. तो ये कल आपकी क्लास नहीं होनी. So Thursday and Friday, Saturday, Sunday, you have a lot of days to complete your work. So I will send you homework. वो आपने homework करना है, okay? I hope you have done this. टीचर किस चीज का करना है? Okay, now I am rubbing it. उसके बाद हम question number 6 start करेंगे. Question number 6, page number 28. The suffix able means can be. Make adjectives by adding able to the following verbs. We are given these verbs. हमने उसके साथ able लगा के यहाँ पे words लिख देने हैं. So I am just writing the words. Like first one is done for you. First one is like. Like के आगे able लगा देंगे. Likeable. Fashion. Right, fashion here. और उसके आगे क्या लगा देंगे? Able. Fashionable. So it will be adjective. हम verb को adjectives में change कर रहे हैं by adding suffixes. Wash. Washable. Comfortable. Enjoyable. And respectable. Now you have to use one word ending with able. So हम comfortable को use करके sentence बनाएंगे. Sofa is comfortable. Question number 7. Choose one word ending in able. Write it in a sentence. So हमने comfortable लिया है. Sofa is comfortable. Now take out page number 29. Take out page number 29. Separate each word into syllables. अब we have given these words. हमने इनको syllables में change करना है. इनको separate कर देना है. Okay? So I hope you have done this. Now I am rubbing it ताकि हम next question start कर सकें. Question number 8.
and the page number is 29. Question number 8, page number 29. तो हम सिर्फ और सिर्फ जो syllables हैं उनको सेपरेट कर देंगे. Number 1, excursion. Respectable. Respectable has 4 syllables. Happiness, H-A-P, happiness. I am important. 3 syllables we have with important, sad, and ness. So we have 2 syllables in sadness, decision, this is excursion, 3 syllables, respectable, 4 syllables, happiness, 3 syllables, important, 4 syllables, sadness, 5 syllables or 2 syllables, and decision, 3 syllables. So just look at this here, question number 9. हमने बताने हैं कि इनमें कौन कितने कितने syllables हैं. So we have 2 syllables in comfortable, comfort and table. 2 syllables. Basketball. This is basketball. Complete this sentence. This is basketball. It has 3 syllables. Cricket, 2 syllables. ये word cricket है. ये नीचे hint दी हुई है. इस hint को पढ़ के आपने करना है. Fourth वाला है tennis. It has 2 syllables. Just do it. Excursion, respectable, happiness, important, sadness, decision. These are we have to separate these labels. After that, we will do this question number 9. Mama, pass me your thing because here if I put the ground is wet. Don't put on this board, put it white, put it around the bread. I hope you have done this. Should I erase it? This time we have to get it. Okay, now I'm rubbing the board. Rub. How much you want I do?
Okay, it's question number 9. What you have to do is use the clues to fill the letters in the balls, write the number of syllables at the end of each word. Now we have given here clues. Game where players kick the ball. कौन सा गेम है जिसमें प्लेयर्स बॉल को किक करते हैं? It is football. So complete it. It टीचर आपकी is वीडियो नहीं football. आ रही. Feel to break a space. F-O-O-T. टीचर आपकी वीडियो नहीं आ रही. Football. It has 2 syllables. Foot and ball. Next is game where you throw the ball through net. Net के through हम ball send करते हैं, उसको क्या कहते हैं? Basketball. टीचर आपकी वीडियो नहीं आ Number 2 रही. is basketball. Basketball. So it has 3 syllables. Write 3. Game where you hit ball with a bat, cricket. We hit the ball with a bat, it's cricket. It has 2 syllables. Number 4, game where you hit the ball over a net, tennis. It also has 2 syllables. Tennis, cricket, 2 syllables. Tennis, 2 syllables. And I draw with picture that they are referring to draw, so I doubt it. I'll draw again. I'll buy one book and no. I hope you have done this. Hey. टीचर आपकी वीडियो नहीं आ रही. Okay, we have 5 minutes left. After doing this, I will write your homework on the board and we will send you homework as well. आपका जो चैप्टर नंबर 8 है जो हमने प्रीवियसली ईद से पहले किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगी और वर्कबुक का होमवर्क भी मैं आपको सेंड कर दूंगी. सो यू हैव लॉन्ग वीक लाइक टुमारो क्लास नहीं होनी, कल की जगह पे आज क्लास ले लिया. वेडनेसडे को वैसे क्लास नहीं होती. फ्राइडे को ऑफ 14 अगस्त, फिर सैटरडे और संडे आ रहा है. सो यू हैव लॉन्ग वीकेंड. So I will give you homework of question answers and I will give you homework of workbook. ताकि आपने ये दोनों काम फिर अपनी कॉपीज के ऊपर कंप्लीट करने हैं. मेक श्योर कि आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए. Now, I hope you have done this. अब मैं आपका होमवर्क लिखूंगी यहाँ पे. Copy your homework. We will send you homework on WhatsApp as well. Once there was a shoemaker. He was a good and hard worker, but he was very poor. One day he found that he was just So page 24, question 5 and 6. Page 25, question 7 and 8. on the table. I will make the shoe in the morning. Page 26. Raise it now. So this is your homework. It is not important कि आप एक ही दिन बैठ के ये सारा होमवर्क कर लें. थोड़ा होमवर्क रोज करें ताकि आपको नेक्स्ट तक ये सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाए जो मैंने आपको दिया है. और मैं आपको आज ही क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 8 के भी सेंड कर दूंगी. वो भी आप साथ साथ अपनी कॉपीज पे करते रहिएगा. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सारा होमवर्क एक ही दिन में करो. मेक योर सेल्फ बर्डनाइज. नो, आई एम गिविंग यू होमवर्क बिकॉज यू हैव holidays further. आगे आपको हॉलीडेज हो रही हैं. यू विल नॉट हैव एनी क्लास नाउ फर्दर. नेक्स्ट वीक तक आपकी नीचे क्लास नहीं होगी. सो यू हैव टू complete your homework. I am giving you. Okay. Mama.
Mama, so next week annual class. Write down your homework with you on your copies. Long weekend you have this Friday spoken office na. I will send you homework on WhatsApp as well. ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको WhatsApp पे homework send कर दिया जाएगा.